Okay, so this is a made-up example in which on 1st January 2009, there are three assets: motor vehicle, tools and equipment, furniture. इनकी cost brought forward, पुरानी depreciation of previous years brought forward to net book values. During the year, the cost of asset purchase were 40, 30, and 20. And during the year, the value of assets sold, उनकी cost और उनकी depreciation were these. ठीक है जी. Because when you sell an asset, you completely wipe off all everything that relates to that asset from your books. ठीक है. And depreciation is 20% RPM, 10% FLM, 10% RPM. ठीक है. Requirement क्या होगी जनाब? Requirement is going to be, I think, cost account बनाने होंगे. Okay. Depreciation account बनाने होंगे और disposal account. Requirement is cost account, depreciation account, and disposal account. ठीक है जनाब. देख रहे थे कोई मस्ती की बात ही नहीं. So yes, we have motor vehicle, tools and equipment, and furniture. सबसे पहले इनका cost account. All right. Now listen to this very carefully. Cost account है और एक asset की बात हो रही है. Asset increase होता है तो debit decrease होता है तो ठीक है. तो cost brought forward कौन सी side पे आएगी? Debit side पे, credit side पे? Where would the cost brought forward be? Because it's an asset, would it be on the debit side or the credit side? So it would be on the debit if it's being brought forward. Cost brought forward on the debit side. Why? Because it's an asset and asset always appear on the debit side. So यहाँ भी cost brought forward, cost brought forward. ठीक है जी. Which is 120, 75 and 60. ठीक है जी. 75 and 60. During the year, you have purchased an asset. While you have purchased an asset, the value of assets would have gone up or down. If you're purchasing further assets, the value of your asset is increasing or decreasing. I'm sorry, sir. Can you repeat the question? If you're purchasing an asset during the year, the value of assets are increasing or decreasing. Increasing. ठीक है जी. And when asset increase, we record it on the debit side or the credit side? Debit side. ठीक है जी. So we will write all the additions over here. 40,000, 30,000, 20,000. And when you sell an asset, जब asset बेच रहे होते हो, तो आपके assets की value कम हो रही होती है. अच्छा. One more thing, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं. Disposal proceed. How much are these sold for? 9,000, 4,000, 7,000. Okay. But in the cost account, we only take the cost of disposal. The cost account में जब उसको खरीदा था तो cost ही एंटर की थी. आज जब बेचेंगे तो cost ही निकालेंगे. Okay जी. Satyam. जी.
So in the disposal proceeds section, you wrote 9,000, 4,000, and then 70,000. So is it 7,000 or 70,000? 7,000. Oh, अच्छा. All right. So disposal cost is basically 20. कौन सी ये वाली? Disposal cost is 10, and इसकी disposal cost is how much? 8. तो उसके बाद cost carried down कितना बचा? 160 minus 20 is 140. Cost brought forward 140. This is 105. 105 minus 10 is cost carried down 95 and cost brought forward 95. This is 60 plus 20 is 80. 80 minus 8 is cost carried down 72. Cost brought forward 72,000. ठीक है जनाब. The cost account is pretty simple. Now we look at depreciation accounts of these assets. Okay, any questions in the cost account? Format cost account में कोई मसला? No, sir. Provision for depreciation motor vehicle. Provision for depreciation motor vehicle. Provision for depreciation of motor vehicle. ठीक है जी. अच्छा जी. Now the question is, depreciation cost का brought forward was on the debit side, right? So depreciation brought forward will be on the credit side. Why? Depreciation reduces the value of non-current assets. ठीक है जी. So depreciation brought forward, which is 46, 37,500 and 15,000. 46 और 15,000. ठीक है. ये तो हो गया बहुत सिंपल. अब आप मुझे बताएं, जब एक एसेट सेल हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन इसमें फर्दर ऐड होगी या इससे निकालेंगे हम? When you have sold an asset, would you be taking depreciation out of this total of the asset sold, or you will be adding it into this value? So you would be taking it out of the total asset value. That is pretty obvious now, because the asset is going out of your business. You don't have it anymore. So what's the point of actually holding depreciation relating to that particular asset with you? What you do is कि जी उस particular asset जितनी भी depreciation up to date है वो सबके सब इसमें से निकाल लोगे, because you don't need it, because you are actually selling the asset. The asset is no more there with you. So disposal depreciation, disposal depreciation, which is depreciation of asset disposed, 12, 5, and 3. 12,000, 5,000, and 3,000.
ठीक है. Now, motor vehicles depreciate हो रहे हैं RPM से, which is cost minus previous depreciation times depreciation percentage. Tools and equipment depreciate हो रहा है SLM से, which is cost minus scrap value into depreciation percentage. And the last one is also RBM, which is cost minus previous depreciation times depreciation percentage. Now, if I look at this, Kiji, what is the closing cost? Cost is, what is the closing cost over here? 140,000. Leftover assets depreciate होंगे ना? What is accumulated depreciation over here? देखो, you had previous brought forward depreciation of 46, जिसमें से 12 तुमने निकाल दी, तो बची कितनी? Sir, 34. बात समझ में आया? देखो, you जी sir. brought forward a depreciation of 46 from last year. उसमें से 12 तो तुमने निकाल दी, because the asset is being sold और depreciation निकल के asset के साथ साथ चलेगी. You don't have this with you anymore. So times depreciation percentage, which is how much? 20%. So 140,000 minus 34 into 20%. देखो जरा क्या आंसर आता है. This 21,200. कितना? 21,200. ठीक है. 21200. So आप मुझे बताएं, चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना? डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, एसेट की वैल्यू मजीद कम हो जाएगी. तो whenever you charging depreciation, ठीक है, the value of asset will go down. So charge to income statement 21,200. ठीक है. ओके, इसको बैलेंसिंग करते हैं. अच्छा, मोटर व्हीकल में the equation is cost minus scrap value into depreciation percentage. So what is the closing leftover cost that is yet to be depreciated? 95,000. This value. Scrap value is 0 times percentage. बहुत simply, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे अलाउ होती है, तो डायरेक्ट कॉस्ट पे लग गई, 95,000 पे लग गई वाली, which is 9,500. The charge to income statement, this is depreciation for the year. This is also depreciation for the year. हाँ जी, थर्ड वाले में कॉस्ट इज 72, सही है जी, एंड लेफ्ट ओवर डेप्रिसिएशन 15 लेकर आए थे, 3 तुमने डिस्पोज कर दिया, into percentage of depreciation as 15%. This is 72 minus 12 times 15%. 9,000 will be your depreciation charge for the year. Any questions, anyone? देखो, reducing balance method में you deduct previous depreciation. और previous depreciation तुमने देखा कि जी, तुम जो पिछले साल brought forward किया था यहाँ पे 46, उसमें से 12,000 तो तुम निकाल चुके हो, तो लेफ्ट ओवर कितना बचा? 34. The closing cost minus previous depreciation into the depreciation percentage. That was reducing balance method. In straight line, you apply depreciation on cost. So direct cost पे लग गई depreciation. Leftover cost पे लग गई. That was not a problem at all. ठीक है जी. इसको balance करते हैं. This is 67,200
67,200 minus 12. So depreciation carried down will be 55,200, or depreciation brought forward for the next year is 55,200. Now this one is 38 plus 9 is 47,000. 47 minus 5 is depreciation carried down 42. Depreciation brought forward is 42. ठीक है जी. This is 24. 24 minus 3. Depreciation carried down 21. Depreciation brought forward 21,000. ठीक है जनाब. So this was another example of depreciation. Any questions, anyone? No, sir. Okay. Now I'm giving you 5 minutes. ठीक है. और एक डेटा दे रहा हूँ मैं तुम्हें. वो डेटा की बेसिस पे. अच्छा फिर एक अकाउंट रहेगा, डिस्पोजल अकाउंट रहेगा. एक चीज रहेगी ना. यस. पहले वी शुड कंप्लीट ऑल ऑफ दिस. ओके जी. डिस्पोजल अकाउंट. Disposal account of motor vehicle. Disposal account of this is equipment. And this is furniture. सर हम क्लास कब एंड करेंगे? बेटे आपके पास एक रेड बटन अपेयर होगा स्क्रीन पे. हो रहा है बॉटम राइट पे. उसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा. नहीं, मैं वैसे पूछी थी सर, क्योंकि मेरा लैपटॉप डेड होने वाला है. मैंने कहा फिर मैं चार्ज कर लूँ अगर आपको टाइम लगेगा तो. नहीं नहीं बेटे, मेरे पास तो 15 मिनट्स है. आप चार्जर ले आए जल्दी से. अच्छा से. ओके, कंटिन्यू. ओके. तो disposal account of motor vehicle, disposal account of equipment, and disposal account of फर्नीचर. ठीक है. देखो यहाँ डिस्पोजल में, मोटर व्हीकल में डिस्पोजल की कॉस्ट क्रेडिट हुई, बिकॉज यहाँ से ये गया और यहाँ पे डिस्पोजल में कॉस्ट डेबिट हो जाएगी. ठीक है. इसकी एंट्री होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट कॉस्ट क्रेडिट. 20,000 कॉस्ट आ गई. और डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड. देखो डिस्पोजल डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में 12,000. डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट which is 12,000. फिर बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट्स फॉर सेल प्रोसीड. Sale proceed is basically, the value received against this asset. That was yearly 9,000. How much money did you receive while you sold this asset? ठीक है जी. तो अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो गेन होगा, और बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो फिर लॉस होगा. तो आप देखें 9 plus 12 is 21. तो 21 minus 20 तो 1,000 का गेन हुआ. और वैसे भी यार अगर आप इसको इस तरह देखें, 12,000 का 20,000 का एसेट था, 12,000 डेप्रिसिएशन थी, तो नेट बुक वैल्यू हुई 8. 8 की चीज 9 में सेल की तो 1,000 का वैसे गेन हुआ. ओके जी. तो डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट इज गोना बी द सेम.
The cost of equipment disposed is 10,000. ये रहा. Depreciation is 5,000. सही है जी. Cost is 10,000. Depreciation of the asset disposed was 5,000. Sale proceed was 4,000. ये कहाँ से मेरा sale proceed? Question में ये given था. Sale proceed was 4,000. ठीक है. So now, if you look at this way, this side heavier debit side to 10,000. 10,000 minus 9,000, so there's a loss of 1,000. ठीक है जनाब. Furniture में disposal cost was 8. Disposal depreciation was 3. Sale proceed was 7,000. So 7 plus 3, this is 10. 10 minus 8 is gain 2,000. ठीक है. So these were the disposal accounts of this particular question. अच्छा जी. अब मैं आपको असाइन कर रहा हूँ एक होमवर्क. ठीक है. Which is I'm going to give you a same data like this. सही है. बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना. क्या मैं सेम डेटा दूंगा? नहीं यार, सेम डेटा में दे देता हूँ. आई एम गिविंग यू सेम डेटा लाइक दिस. और आपने करना ये है कि जी उसके यही कॉस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट मिला. ठीक है. I will also upload this video so that what you can do is you can watch this video and with the help of this you can make a double entries or EAT accounts बना सकते हो. ठीक है. Any ठीक है, sir. questions? No, sir. नहीं. चलो बेस्ट.